Okay, okay. So welcome back to YouTube channel शिवम पाटिल and the शिवम शो। आज हम काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन देखने वाले हैं एंड दैट्स रिगार्डिंग टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में हाल ही फिलहाल में काफी अच्छा खासा डाउन मूव देखने के लिए मिला है एंड दैट्स अ वेरी गुड डाउन मूव। लेट मी क्लियर द चार्ट्स फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर यू टू बी बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अगर हम देखें तो यहाँ से फ्रॉम ऑल टाइम हाई से लेके अगर देखा जाए तो यहाँ पे लेट मी रिलोड द चार्ट फर्स्ट। This is Maruti and Suzuki. Let me load it for Tata Motors. Tata Motors. Okay. Here we are. Here we are at Tata Motors. So देखते हैं डाउनफॉल कितना परसेंटाइल का फ्रॉम ऑल टाइम हाई से लेके अभी तक अगर देखा जाए जो करंट मार्केट प्राइस है लगभग लगभग 33% का डाउनफॉल देखने के लिए मिला है। ठीक है, this is not a market recommendation or anything. We have a we have a disclaimer as well in this video. So दिस इज गोना बी अ लॉन्ग वीडियो फॉर श्योर। कम से कम ये अबाउट 30 मिनट से लेके 1 आवर तक का वीडियो हो सकता है। सो कंप्लीट इन आउट देखेंगे लोग टाटा मोटर्स का एंड यहाँ पे एक स्लोगन है विच इज दिस टाटा मोटर्स ओनली टाटा मोटर्स और जेएलआर, हम लोग ये भी समझेंगे। ठीक है, सो इट्स गोना बी अ 30 मिनट्स और 1 आवर वीडियो। इफ यू आर नॉट हैविंग टाइम राइट नाउ प्लीज सेव द वीडियो टू वॉच इट लेटर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। Let's get started. We are going to have a in and out of Tata Motors. What's happening in Tata Motors? Comparison with the peer Tata Motors, and also yeah, this is this is the brief outcome. This is the brief outlining of today's video. Before starting up with the video, here are a few disclaimers. Content in the video is only for education purpose. It's not any kind of investment advice. Investment/trading of securities are subject to market risk. I am not a SEBI advisor. I will not be responsible nor liable, not be responsible nor liable for any losses resulting from direct or indirect use of such information. Before investing/trading in securities stock, please do your own research. Kindly seek advice from a financial advisor before investing/trading in any kind of security/stock. Okay, so let's get started. Not wasting any single moment. Is Tata Motors is only Tata Motors or it's JLR? JLR क्या है? JLR stands for Jaguar and Land Rover. क्या टाटा मोटर्स सिर्फ टाटा मोटर्स है या फिर वो JLR है? Rather than having Tata Motors and JLR के बीच में रिलेशनशिप हम लोग समझेंगे हो क्या रहा है between these two entities. Okay, so यहाँ पे हम देख सकते हैं टाटा मोटर्स का लोगो है, JLR का लोगो है, यहाँ पे JLR का भी लोगो है। ठीक है, so yeah, let's move to the first point, visiting the charts of Tata Motors in comparison with peers. We'll be having a brief visit to Tata Motors chart and we'll compare the charts with peers as well. Let's get started. टाटा मोटर्स का अगर हम चार्ट खोलते हैं एंड हमारे पास कंपैरिजन हम बेसिकली 3 से करने वाला है। लेट्स गो डाउन फॉर अ व्हाइल। हमें यहाँ पे एक पेज मिलेगा। यस, Before starting, Tata Motors acquired Jaguar and Land Rover from Ford Motor Company on 2nd of July 2008. यहाँ पे JLR एक लग्जरी ब्रांड है जो टाटा मोटर्स एक्वायर करता है फ्रॉम फोर्ड इन 2008. This is a very important crucial points in Tata Motors that has to be noted. ठीक है, let's visit the charts of Tata Motors and compare it with peers. Comparison के हमारे पास 3 peers होंगे. अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर डिस्प्लेस बाय टाटा मोटर्स एज पर कंपेयर विद पीयर्स, हम लोग देखेंगे कैसा बिहेवियर ये इंपोज करता है एज कंपेयर टू पीयर्स। कंपैरिजन हम लोग 3 से करने वाले, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति एंड सुजुकी एंड अशोक लेलैंड। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि कंपैरिजन में पीयर्स में हम लोग कभी इसको कंपेयर कर ही नहीं पाएंगे टाटा मोटर्स को एज कंपेयर टू एमएनएम, मारुति एंड सुजुकी एंड अशोक लेलैंड। ठीक है, इनका कंपैरिजन कभी टाटा मोटर्स से हो भी नहीं सकता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो लेट्स गेट फ्लिप्ड। सो यहाँ पे काफी अलग अलग डिसीजंस देखने के लिए मिलेंगे हमें कि हम बोल रहे हैं कि लेट्स विजिट द चार्ट्स ऑफ टाटा मोटर्स एंड कंपेयर इट विद पीयर्स। सॉरी, अनसर्टेन बिहेवियर डिस्प्लेड बाय टाटा मोटर्स हम लोग देखने वाले, पर ये जो 3 है ये कभी एज पर द सीन
हो ही नहीं सकती, वो आने वाले टाइम में देखेंगे। फॉर नाउ लेट्स विजिट द चार्ट्स। ठीक है, हियर इज द चार्ट ऑफ टाटा मोटर्स। ओके, टाटा मोटर्स को मंथली टाइम फ्रेम में हमने खोल रखा है। इट्स बीन अ वेरी गुड थिंग, काफी अच्छे रिटर्न्स दे चुका है टाटा मोटर्स। 90% डाउन जा चुका है काफी बार, काफी वोलेटाइल एसेट रहा है, हम लोग देख सकते हैं काफी वोलेटाइल रहा है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स हैज बीन अ वोलेटाइल एसेट्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे देखिए लगभग लगभग 78% का फॉल देखा गया फ्रॉम 1996 से लेके 2000 तक। अगेन इफ वी गो अगेन, यहाँ पे अगर देखा गया है मार्च 2006 2006 से देखा जाए तो 2006 से भी देखा जाए तो फिर ऑन एन एवरेज 86 परसेंटाइल का फॉल रहा। दैट्स अ वेरी हाई फॉल। एज पर इक्विटी देखा जाए तो दैट्स अ वेरी हाई फॉल। अगेन 2015 में 56 परसेंटाइल का फॉल देखा गया है। द लो इट क्रिएटेड इज ऑन 2015 इटसेल्फ, फेब 2015 से लेके सितंबर 2015। सो दिस इज अ वेरी वोलेटाइल थिंग, वापस से फॉल हुआ बाय अबाउट 88 परसेंटाइल। 88 percentile from 1st September 2016 to 2nd March 2000, 2nd March 2020, तब तक ये 88 percentile follow, but after that when the COVID trigger happened, there is no going back for Tata Motors. Tata Motors literally jumped by 1898 percentile, and now it's down by 33 percentile. A great story of Tata Motors. ठीक है, let's clear these things for now and एक अच्छा सा रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट फाइंड आउट करने की, की लेवल फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो एज वी कैन सी फॉर नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट की लेवल, 600 लेवल्स, एंड फ्रॉम 600 to 700 to 600 is a very good level for Tata Motors to be consolidated. When I say these things, which means यहाँ पे काफी स्वीट टाइम अपना स्पेंड कर सकते हैं, वापस यहाँ पे कंसोलिडेशन में जा सकता है, फिर यहाँ पे सपोर्ट ले सकते हैं। दिस इज नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, दिस इज अ बेसिक टेक्निकल एनालिसिस। ओके, सो moving ahead, let's mark this level for now 600 का level let's mark for now. So हम देख सकते हैं टाटा मोटर्स काफी वॉलेटाइल रहा है। ओवर टाटा मोटर्स हैज नेवर बीन अ लीनियर प्रोग्रेशन लाइक दिस। छोटा मोटा ड्रॉडाउन अच्छे रहते हैं, कंसोलिडेशन डाउन अच्छा रहता है, देन अपवर्ड। दिस इज द मेजर इक्विटी बिहेवियर जो रहता है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं अब 90% डाउन जा रहा है, 80% डाउन जा रहा है, वापस से यहाँ पे 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 लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए डाउन में था। तो टाटा मोटर्स इज अ वेरी वॉलेटाइल asset as compared to its peer, which is Mahindra and Mahindra. Let's open Mahindra and Mahindra here. Okay, is that the thing in case of Mahindra and Mahindra as well? क्या Mahindra and Mahindra कभी इतने डाउनफॉल में था? नहीं, it opened great, it opened then fall, it opens here 2007 June July 2007 it opened here it fall for it's 74%, उसके बाद 74 is the greatest fall, and afterwards उसके बाद देखा जाए तो वापस एक और फॉल आता है which is 74 again 74। उसके बाद महिंद्रा में फॉल देखने के लिए मिला ही नहीं as a major fall as compared to the previous falls. Then it's peaked around 1232 percentile. So क्या ये behavior as compared to Tata Motors is less volatile? Yes, it's less volatile, obviously it's less volatile. ये टाटा मोटर्स यहाँ पे वापस से डाउन जा रहा है, यहाँ पे डाउन जा रहा है, then it's going down again here as well. Okay, it's going down again here as well. Let me just show how. ठीक है, मल्टीपल डाउन फॉल टाटा मोटर्स ने देखा, and it's again down as compared to Maruti and Suzuki. We will compare with Maruti and Suzuki as well. Can Maruti and Suzuki ने कभी इतना वॉलेटिलिटी देखा?
Let's see, on a 1 month time frame we have to open. It's fall. It's fall. It has seen a fall, a good correction during 1st October 2007 to, let me reload the chart. Okay, let me reload it for a while again. Okay, let's see. Yeah. So does that corrected by about 46%? This is the right side. Let me consider a good fall from this point. We should consider यहाँ पे ओपनिंग हुई है फ्रॉम दिस पॉइंट वी शुड कंसिडर क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग हुई है until it's 63% एक बार डाउन गया था, then it went around 45 percentile, but afterwards this is not a major fall. यहाँ पे एक फॉल देखा गया था of about 56 percentile, then the COVID came and it again went up by nearly to 199, which is 200 percentile. Okay, so यहाँ पे बेसिक पेयर कंपैरिजन अगर हम देखें तो यहाँ पे हम देखने के लिए मिलता है कि जो टाटा मोटर है वो काफी वोलेटाइल है, वो काफी ड्रॉडाउंस देख चुके हैं अपने पास में, उन ड्रॉडाउंस को ओवरकम भी किया है। ठीक है, वो जो ड्रॉडाउंस देख चुका है वो काफी उन ड्रॉडाउंस को ओवरकम भी किया है। लेकिन तो चलो एक अशोक लेलैंड का भी एक चार्ट देख लेते हैं। अशोक लेलैंड, ओके, सेम थिंग, नॉट अ मेजर ड्रॉडाउन एनी हाउ। यहाँ पे एक ड्रॉडाउन था 50 फिर 75% का, देन इट्स अराउंड हियर एज वेल 66% it went bullish. Then the COVID crash. It's not a COVID crash by the way, पहले से stocks गिरना शुरू हो गए थे काफी, they were crashing since 2018. Okay, so it's about 77 percentile and afterwards it went bullish, and for till today's mark it's about from its previous low, it's all about high by 560%. सो हमें ये चीज देखने को मिल रही है टाटा मोटर्स में कि टाटा मोटर्स ने काफी ड्रॉडाउंस देखे हैं। ठीक है, टाटा मोटर्स हैव सीन ड्रॉडाउंस लाइक दीज दिस इज अ वेरी माइनर ड्रॉडाउन फॉर टाटा मोटर्स। ठीक है, पर टाटा मोटर्स हैज केम बैक एंड इवन केम बैक स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द फोर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द कोविड बाइंग रीजन। टाटा मोटर्स इज अप बाय 1800%, which is highest among Tata Motors, Mahindra and Mahindra, Maruti Suzuki, and Ashok Leyland from the COVID bottom. Yeah. So whenever Tata Motors picks it pace, it gives exceptional returns. Whenever Tata Motors picks it pace, it gives exceptional returns. यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा whenever Tata Motors picks pace, it gives exceptional returns. Okay, whenever, this is a very important point to be noted. So let's move ahead with, let's visit the numerical data of Tata Motors and compare it with peers. Comparison with peers हमने नीचे रखा है numerical data का, काफी elaborated। ठीक है, वीडियो वाला, लेट्स गो। सो अभी हम देख सकते हैं कि मार्केट कैप इज एज ऑन 4th of January 2,90,956 crores is market cap. Current price is 790 and stock P is 8.69, which is a very low P as compared to earning they are doing. अगर हम P चार्ट देखिए, P कूल डाउन चार्ट देखिए अगर हम लोग,
सो हमने यहाँ पे देखा काफी कूल डाउन आया है पी में फ्रॉम द प्रीवियस। 103 का पी था टाटा मोटर्स का। कैन यू सी द कूल डाउन, कैन यू सी द कूल डाउन ऑफ पी? 103 का पी था 2023 मई में टाटा मोटर्स का, एंड इट्स अबाउट कूल डाउन बाय। डज दैट मीन्स क्या इतना डाउन वैल्यूएशन मैटर करता है? क्या इतना डाउन वैल्यूएशन होना चाहिए इसमें कि 103 फिर हैविंग अ पी ऑफ 103 103 and its p become about current p is 8.69, a very massive drop in p। क्या यही p का महिंद्रा एंड महिंद्रा में ड्रॉप आया है? हम लोग देखेंगे। क्या यही p का ड्रॉप महिंद्रा एंड महिंद्रा में आया है? विल सी। यस, ड्रॉप तो आया है, तो दैट्स नॉट अ मेजर ड्रॉप। 18 अर्निंग्स हिट हुई है, इन सबकी अर्निंग्स काफी कम हुई है एज कंपेयर टू द क्वार्टर अर्निंग्स, सो p हैज बीन ड्रॉप। पर when it's 113 and when 18 टाटा मोटर्स का भी कंपैरिजन के बेसिस पे उतना ही था, 103, जमा 10-20 पॉइंट आगे पीछे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एनालिसिस। हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट्स को नहीं देखेंगे, डायरेक्ट पीएनएल स्टेटमेंट में जाएंगे। लेट्स गेट। सो मार्च 2013 से लेके वी आर हैविंग टिल टुडेज मार्क हमारे पास डेटा है। सेल्स हैज बीन अर्निंग कंटिन्यूअसली, हम लोग देख सकते हैं सेल्स आर बी इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, हम लोग देख सकते हैं द सेल्स आर इंक्रीजिंग। लगभग सेल्स इंक्रीज होकर डबल हो चुके हैं, डबल से भी ज्यादा हो चुकी है, दैट्स अ वेरी गुड साइन। Expenses are also being increasing, good, expenses should also increase as per the sales has increasing। 314 33 this 379, great। Operating profit has been doubled, more than doubled। Operating profit margins has been linearly being constant, operating profit margins should increase eventually over time। 13 15 15 16 11 11 8 यहाँ पे सिंगल डिजिट हिट हुआ है। 2019 और 20 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमारा सिंगल डिजिट हिट हुआ है। व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन? बाय द वे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मतलब जो हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया, जितने की सेल्स किए, जितने का सेल्स का उसमें से डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर माइनस करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो भी उस चीज को बनाने का खर्चा आया, उस गाड़ी को बनाने का खर्चा है केस ऑफ टाटा मोटर्स, हम उसमें एक्सपेंसेस डायरेक्ट अगर माइनस कर दे तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचता है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो कितना परसेंटाइल है ऑफ द टोटल सेल? फॉर एग्जांपल 24596 is 13 percentile of the total sale, which is 188793 here। 59538 is 14 percentile of 437928, okay। So this is what we meant by operating profit। So operating profit should linearly increase as per the time increases। So हम देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट इवेंचुअली एंड ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, स्टेप अप हो रहा है इस चीज में। 14 14 14, होप फॉर द नेक्स्ट ईयर विल डूइंग ग्रेट एंड गुड। अदर इनकम्स में अगर हम देखें तो अदर इनकम्स में यहाँ पे हमें इसको इलेबोरेट करना पड़ेगा। अदर इनकम्स के लिए एक्सेप्शनल आइटम्स हमारे इसमें कैश आउटफ्लो हुआ है, कैश आउटफ्लो हुआ है, कैश आउटफ्लो हुआ है, कैश आउटफ्लो है, कैश इनफ्लो, इनफ्लो, आउटफ्लो, this is outflow। So exceptional items are one time expenditure which is done by a company to do anything. That could be if it's a cash outflow, that means either they are settling off their debt, either they are having a good machinery being set up or not। So this is exceptional item। So काफी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है अगर देखा जाए तो। अदर इनकम्स में हमारा कैश इनफ्लो आएगा, कैश आउटफ्लो, एक बार कैश आउटफ्लो भी अदर इनकम्स में। अदर इनकम नॉर्मल्स, इंटरेस्ट, दिस इज इंटरेस्ट, ओके, डेप्रिसिएशन, गुड। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हम लोग डायरेक्ट जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है दिस इज ऑल्सो ग्रोइंग इवेंचुअली। लगभग ये जाते जाते भी यहाँ पे 3 टाइम्स हो चुका है, लेसर देन 3 टाइम्स, नॉट दैट मच, बट 2.5 टाइम्स तो हो चुका है एज पर टिल टुडेज मार्क फ्रॉम 2013। दैट्स अ ग्रेट जर्नी। नेट प्रॉफिट अगर हम देखें आफ्टर टैक्स पेइंग
33,000, the company is still profitable. The company is still profitable. क्या मार्च 2014 से टिल टुडेज मार्क क्या ये कंपनी नेगेटिव में गई है? नहीं, नहीं। फिर इतना 30% का फॉल क्यों? क्योंकि द मार्केट इज बिन बेरिश। ठीक है, द मार्केट इज बिन बेरिश एंड लेट्स मूव अहेड विद द सेम। Earning per share has been increased. This has been like, on an average, this has been tripled. Earning per share has been tripled, so it's a quite a good company to behold and available at a very great discount. This is not an investment advice or any kind of buyer's recommendation. देख सकते हैं हम लोग टोटल लायबिलिटीज एंड टोटल एसेट्स सेम है। ग्रेट। अब आता है मेजर इशू। मेजर इशू से अच्छा मेजर पॉइंट टू बी नोटेड, प्रमोटर होल्डिंग इवेंचुअली डिक्रीज हुई है। सितंबर 2024 में 42.58% है प्रमोटर होल्डिंग थी। यहाँ से प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग सेल की है। डज दैट मीन इट्स अ नेगेटिव एक्सपेक्ट? नहीं, क्योंकि अगर प्रॉफिट बुकिंग, अगर प्रमोटर्स ने अर्ली एंट्री ली होगी इस चीज में तो दे विल सेल फॉर श्योर। अब जो सेल ऑफ हुआ है प्रमोटर होल्डिंग का, किस किसने एब्जॉर्ब किया है? थोड़ा बहुत एफ ने किया है, डीआईज ने किया है, गवर्नमेंट ने भी थोड़ा उठाया है, देन पब्लिक ने भी उठाया। तो मेजर टू holders of Tata Motors right now, FIIs and public. So for that, for this fall, which has occurred, this is majorly occurred because of promoter holding. Okay, so Tata Motors is doing great. Any kind of issue तो नहीं लग रहा as such, any kind of revenues and all, nothing to be worried about. Nothing to be worried about. Net profit is also growing good. This is also growing good. Okay, let's get ahead. Compare with Mahindra and Mahindra, अगर हम देखें तो Mahindra and Mahindra अगर हम देख सकते हैं तो sales has continuously increased. ठीक है, sales has continued. This is quarterly profit. Sorry, let's go down. Sales has increased. Sales has increased, and it's near. It's not. It's on an average it has been doubled. इन केस ऑफ टाटा मोटर्स अगर ट्रिपल हो जाती थी तो यहाँ पे डबल हुई है। एक्सपेंसेस देखा जाए तो एक्सपेंसेस ओपीएम मार्जिन इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के काफी हाई है। 19%, 18%, 17%, 16%, 15%. A great point is operating margins from 2020 has been always been on a rise. 2020 से महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हमेशा एक पॉजिटिव ट्रेंड में रहे हैं। That's a great sign for Mahindra and Mahindra. अदर इनकम्स में देखा जाए, एक्सेप्शनल आइटम्स में देखा जाए तो यहाँ पे भी एक नेगेटिव एक्सेप्शनल आइटम्स रहा है। तो यहाँ पे कैपेक्स हुआ है, कैश आउटफ्लो है तो फॉर एनी काइंड ऑफ सेटलमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ प्लांट्स और एनी काइंड ऑफ मशीनरीज। अदर इनकम्स देखा जाए तो पॉजिटिव, इट्स ग्रेट, इंटरेस्ट इज ग्रेट। लेट्स गो डाउन। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मेन थिंग, 5,000, 5,000, 4,000, 5,000, 10,000, 8, 1,000, कोविड हिट हुआ था यहाँ पे। सो ऑब्वियसली ऑटोमेशन सेक्टर, ऑटोमेटिव सेक्टर हिट होगा। 17,000। सो फाइनली here is a double digit figure, here is a double digit figure, here is a double digit figure. Let's compare it with Tata Motors. OPM, sorry, not OPM, PBT, profit before tax, double digit figures में थे? No, Tata Motors में अभी तक double digit figure hit नहीं हुए। So they have done a great 5,007. So इस साल let's see, but till now we have never seen a double digit which means 10,000, about 10,000 crores PBT in Tata Motors, while in case of Mahindra they are achieved. Okay, so tax they are giving, and net profit is about net profit is also in double figure, about 10,000 crore this year. This year great.
They have been doing great, and this is a very linearly growing company, a very good example of how a company should grow. Okay, eventually over time. अगर हम लोग डेप्टर्स डे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, promoter holding has been decreased, FI holding has been increased, DI holding has been a little bit on the decrease side, government has been same holding, public is also having same holding. So promoter की जो dilution थे, those are taken by FIs. So great thing. Let's compare with Maruti and Suzuki. Let's compare with Maruti and Suzuki. Maruti Suzuki India Limited. Sales has been continuously increasing. They didn't even double their sales from. Okay, so this is quarterly. Sorry again. Sorry. मैं बार बार quarterly दिखा रहा हूँ आपको. Sorry. Okay. So on an average, 44,304 crores, so 1 lakh. So they triple their, more than tripling their sales. Expenses have been increasing. That should increase as per the sales increase. OPM margin देखना पड़ेगा हमें. Operating profit margin 10, 12, 14, 16, 15, 13, 10, 8, 7, 11, 13. What has been a great operating margins. So operating margins Tata Motors में तो same है. Issue क्या रहा है? Operating margins Tata Motors में तो same है. In short, they are increasing their operating margins as well. So what's the problem in Tata Motors? We'll see. We'll see. ठीक है. Other incomes क्या? Are they having any kind of capital expenditure? नहीं. Exceptional items? नहीं. They are not having any kind of capital expenditure or exceptional items. Which means if there is no exceptional items in negative, that means the company is not, I like to say, not one-time investing on something which could be planned establishment or further expansion. So यहाँ पे देख सकते हैं कि यार आप exceptional items से income हुआ उनको, पर exceptional items से उनको कोई outflow नहीं है, which means they are not setting up anything. Okay. Which is in the case of Tata Motors. अगर हम देखा जाए other income से exceptional items हमारे काफी high है. Negative, great, negative, 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 negative. Because Tata Motors is continuously doing something in back end. अगर exceptional items में negative आ रहे हैं, Tata Motors is doing something in back end. Maruti and Suzuki वापस आते हैं. Other incomes is fine. Other incomes में अगर हम explain करेंगे, interest depreciation, profit before tax is always growing, good. After taxation net profit अगर हम देखें, which is 2,470 crore to 14,000, it's a great increase in profit. It's a very great increase in profit. And this is a very linear growth. अगर आपको एक कंपनी का एग्जांपल लेना तो linear growth देखो, कहीं पे भी नेगेटिव नहीं जा रहे, कहीं पे भी नेगेटिव नहीं जा रहे. That's a very linear increase growth. क्या ये टाटा मोटर्स में देखा गया है? क्या यही टाटा मोटर्स में देखा गया है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या लीनियर तरीके से इंक्रीज होता है टाटा मोटर्स में? लेट्स सी. नेगेटिव, ग्रेट, 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 नेगेटिव अगेन. Sorry. Okay. So net profit is being increasing. It suddenly decreased. It again decreased. It went into negative, went into negative, went into negative, went into negative, recovered, increasing, increasing. So Tata Motors is on a verge of increase. Okay. इसके बाद ये बहुत एक्सेप्शनल पॉइंट है. नेट प्रॉफिट इन लोगों ने सिंगल फिगर 1000 से लेके डबल फिगर्स में लेके आ गए ये लोग. ठीक है. दैट्स अ वेरी ग्रेट पॉइंट. EPS, earning per share. Okay. So dividend payout, good, great Tata Motors में. So यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये सिंगल वे में नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा था, which is this thing. कहीं पे नेगेटिव नहीं गया, कहीं पे अप डाउन्स नहीं आए. इट्स नॉट लाइक दिस
is linearly increasing. This is in case of Tata Motors, this is in case of other companies. Okay. So let's go down. शेयर फ्लोटिंग पैटर्न अगर हम देखें, प्रमोटर की होल्डिंग ओवर द टाइम बढ़ी है, दैट्स अ ग्रेट साइन. एफआईएस की होल्डिंग ओवर द टाइम कम हुई है, अल्टीमेट दैट गोज टू प्रमोटर. डीआईएस की होल्डिंग इवेंचुअली बढ़ी है, गवर्नमेंट की होल्डिंग बढ़ी है. इट्स अ ग्रेट थिंग. लेट्स मूव अहेड. बेसिक कंपैरिजन हमने देखा टाटा मोटर्स का ऑन डेटा साइड. सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे यार न्यूमेरिकल डेटा के हमारे पास कंक्लूजन क्या क्या आते हैं. कंसिस्टेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओवर टाइम. कंसिस्टेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है which is very consistent operating profits. They are very good on operating profits, generating operating profits. They are very good. Let me just delete it. अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स देखें टाटा मोटर्स का, दे आर कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग देयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स इवेंचुअली ओवर टाइम. ठीक है, बट व्हाट इज द इशू देन? What's the issue then? Percentile of OPM has been decreased or constant since March on total till TTM. Today is March. Reason being the rate of increase of sales and expenses are same. ठीक है. सो परसेंटाइल जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उसका परसेंटाइल लगभग लगभग सेम रहा है, या फिर थोड़ा बहुत गिरा भी है इस पीरियड के टाइम फ्रॉम 2013 से लेके टिल टुडेज मार्क. एनी डाउट्स? A large gap between operating profit and net profit is due to the internal restructuring and multiple factors playing out. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर आप देखोगे लार्ज गैप बिटवीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बीच में जो है काफी मेजर गैप है. कहीं पे देखा गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव है, इन लार्ज पॉजिटिव है, नेट प्रॉफिट नेगेटिव है. ये किस लिए? इट्स ड्यू टू इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग एंड मल्टीपल फैक्टर्स प्लेइंग आउट. कंपनी किसी और डायरेक्शन में अपने ट्रेजेक्टरी को ले जाने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बीच में फर्क आ रहा है. I repeat myself, a large gap between operating profit and net profit is due to internal restructuring and multiple factors playing out. ठीक है, लेट्स सी ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बीच में फर्क कितना है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम देखें यहाँ पे, ग्रेट 24,000, great 34, good. Now see here, 24 minus 28, नेट प्रॉफिट इज अ नेगेटिव. अदर इनकम से हम लोग -26 जा रहा है. ये जा कहाँ पर है -26? इट्स ऑन एवरेज ऑफ एक्सेप्शनल आइटम्स में हमारा खर्चा हो रहा है. एक्सेप्शनल आइटम्स which means we are setting up multiple plants, we are investing in other things. For example, machineries and all. Okay. So यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि 70,000 is a positive operating profit. For sure there is a decline as compared to previous year, but net profit is still decreasing. Increasing net operating profit, net profit negative. Decrease as compared to previous year, operating profit, net profit is still in negative. They are slowly and steadily increasing the net profit. This is a very positive point from 2013. There's a very major jump to 2014 to 2023 to 2024. This is a very major jump. Okay. पिछले 3 साल में टाटा मोटर्स ने एक बहुत पॉजिटिव मूव दिखाया है इन टर्म्स ऑफ नेट प्रॉफिट. इज अ वेरी गुड थिंग. ठीक है, सो ये एक नेगेटिव एक्सपेक्ट हो सकता है, but from past 3 years has been good. A large gap between operating profit and net profit is due to internal restructuring and multiple factors playing out. Comparison with peers देखा हमने, पर मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि हम टाटा मोटर्स को इन तीनों से कंपेयर कर ही नहीं सकते. क्यों? क्योंकि comparison with peers as compared to M&M, Maruti Suzuki, Ashok Leyland, that's not so applicable. This is not applicable with these three which are happening. In case of above, that's not the case as compared to Tata Motors. ठीक है, so Tata Motors has been quite volatile. I want to say right over here. On real basis, we can't compare it with any other because it's include PV, passenger vehicle, CV, commercial vehicle, luxury segments of JLR. ये बहुत important statement है. On real basis अगर हम देखा जाए टाटा मोटर्स को, हम उसको कभी M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा,
अशोक लेलैंड एंड आई वुड लाइक टू से मारुति सुजुकी। इन दोनों से कंपेयर कर ही नहीं सकते क्योंकि इसके अंदर एक लग्जरी सेगमेंट प्रेजेंट है टाटा मोटर्स के अंदर, विच इज जैगवार एंड लैंड रोवर। राइट अवे, राइट ओवर जैगवार एंड लैंड रोवर जीएलआर, बहुत ही लग्जरी सेगमेंट टाटा मोटर्स के अंदर प्रेजेंट है, which it acquired from Ford Motor Company, Ford Motor Company on June 2nd 2008। इसके अंदर रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है। जो मेजर गेम है वो जीएलआर के अराउंड प्ले कर रहा है, टाटा मोटर्स नॉट अराउंड टाटा मोटर्स। हम लोग देखेंगे अंडरस्टैंडिंग द सेल्स फिगर एंड पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीएलआर। हमें ये देखना पड़ेगा, अगर हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं टाटा मोटर्स में तो हमें जीएलआर को समझना पड़ेगा एज कम्पेयर टू टाटा मोटर्स। फाइन। हम लोग देखते हैं अभी सेल्स फिगर कैसे प्ले आउट कर रहा है टाटा मोटर्स की। लेट मी जस्ट फिट आउट द स्क्रीन, थोड़ा और करना पड़ेगा जूम आउट। ग्रेट, ओके, सीम्स ग्रेट। ओके, टाटा मोटर्स रेवेन्यू ब्रेकडाउन बाय सेगमेंट। Passenger vehicles means Tata Harrier, Tata Safari, Tata Nexon. These only contribute to 12 percentile of Tata Motors income. I repeat myself, these only contribute to 12 percentile of Tata Motors income. Okay, Tata Motors commercial vehicle, for example, their trucks, their heavy vehicles, only contributes to 19 percentile of their sales or income. So where the rest comes from? It comes from Jaguar and Land Rover, which is 68 percentile. Revenue breakdown for quarter of fiscal year 2024. Quarter 4 2024 revenue is of 0.1 lakh crore, 1.05 lakh crores. Okay. 68 percentile of the sales come from Jaguar and Land Rover. What does that mean? What does that mean? What does that mean? अगर टाटा मोटर 100 रुपए कमाता है तो 100 रुपए में से ऑन एन एवरेज जो सेल करता है 100 रुपए की सेल्स करता है तो उसमें 68 परसेंटाइल की सेल, 68 रुपीज की सेल जो है एक जेएलआर को कर रहा है। सो क्या टाटा मोटर्स सिर्फ टाटा मोटर्स है या फिर वो जेएलआर है? That what I mean from here. Is Tata Motors only Tata Motors or is Jaguar and Land Rover? That what I meant from here. ठीक है, आप क्लियर हो चुके होंगे। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। टाटा मोटर्स इज नो मोर टाटा मोटर्स, इज जेएलआर। टाटा मोटर्स अब जेएलआर है, टाटा मोटर्स नहीं है। It's more of JLR. Hence, understanding the JLR business is of key importance and they hold major stakes in sales. हमें समझना पड़ेगा JLR का फ्यूचर विजन क्या है। Hence, understanding the JLR business is of key importance as they holds major stake in sales. ठीक है? Let's go down. Understanding future vision of JLR. फ्यूचर विजन ऑफ जेएलआर क्या है? जेएलआर चाहता क्या है? जेएलआर करना क्या चाहता है? जेएलआर के बारे में हमें समझना पड़ेगा। जेएलआर आगे जाके सेल्स में क्या करने वाला है। सो वी हैव रिटन अ होल थिंग ऑन इट। डू पे योर अटेंशन। इलेक्ट्रिफिकेशन स्ट्रेटजी, ऑल इलेक्ट्रिक फ्यूचर बाय 2013। जेएलआर हैज कमिटेड टू बिकम अ फुल्ली इलेक्ट्रिक कार कंपनी बाय 2013। बाय 2030 जेएलआर पूरे तरीके से इलेक्ट्रिक कार कंपनी बनना चाहता है। दिस इंक्लूड transition its luxury Jaguar brand to all electric lineup by 2025। Jaguar 2025 तक all electric हो जाएगा। Land Rover, while still emphasizing electric model, will offer a range of electrified vehicles। So ये कहना चाह रहे हैं कि Land Rover जो है while still emphasizing electric model, वो emphasize करेंगे Land Rover पर, will offer a range of electric, वो emphasize करेंगे, but they will not fully convert Land Rover electric, including hybrid and full electric version of its iconic models. Good thing. Increase investments in EVs. The company is significantly investing in electric vehicle technology, so development of new plants like modular longitudinal architecture and battery tech to support this transition. Multiple investments are happening. Great. हम लोग देख रहे थे, हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग कैश स्टेटमेंट में, हम लोग इसमें देख रहे थे पीएनएल स्टेटमेंट में, अगर हमारा अदर इनकम्स में यहाँ पे नेगेटिव जा रहा है, नेगेटिव 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 16 में नेगेटिव, चलो 16 में इतना ईवी सेगमेंट का नहीं था। फ्रॉम 2019 वी हैव सीन अ राइज, फ्रॉम 2020 वी हैव सीन अ राइज, फ्रॉम 2021 से 2022 वी हैव सीन अ राइज। दीस 4 years वी हैव सीन अ राइज इन ईवी। आप देखिए आपके अगल बगल कितनी ईवी गाड़ी आपको दिख रही है आजकल। आप देखिए यहाँ पे कैश आउटफ्लो हो रहा है फ्रॉम द पीएनएल स्टेटमेंट, वेयर इज इट गोइंग?
वेयर इज इट गोइंग? ये जा कहाँ पे रहा है? जो अगर आप देख रहे हो यहाँ पे कैश आउटफ्लो, ये जा कहाँ पे रहा है? ये यहाँ पे जा रहा है। ये यहाँ पे जा रहा है. The company is significantly investing in electric vehicle technologies such as development of new platforms like the modular longitudinal architecture and battery tech to support the transition. ये पैसा यहाँ पे जा रहा है. Okay. So let me summarize. ये कहना क्या चाहते हैं? They want to say कि जो Jaguar segment है वो तो फुल इलेक्ट्रिक कर देंगे ये लोग, फुल्ली इलेक्ट्रिक करेंगे ये लोग बाय 2030. एंड जो लैंड रोवर का जो सेगमेंट है, they will emphasize on electric model but will be offering the conventional engine as well. वो लोग emphasize करेंगे but they will not gonna fully transition. JLR to by 2030, by 2030 नहीं तो 2025 तक तो जैगवार तो फुल्ली इलेक्ट्रिक हो जाएगा. ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स हमारी यहाँ पे जा रही है, कैश आउटफ्लो जो हो रहा है. ठीक है, सस्टेनेबिलिटी एंड कार्बन न्यूट्रलिटी. Carbon neutral by 2039, JLR has set a goal to achieve net zero carbon emission across its supply chain, product, and operations by 2039. This includes reducing emissions, improving production process, and adoption to sustainable material across vehicle lineups. ठीक है. Sustainable manufacturing companies increasing the use of renewable energy in its factories and focus on sustainable materials such as recycled textile and so पूरा का पूरा green जाने का यहाँ पे देखा जा रहा है. Zero carbon emission by carbon neutral by 2039 and sustainable manufacturing companies increasing the use of renewable energy पे focus किया जा रहा है. So, recycled textile and responsible for responsible sourced metals. ठीक है. टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट देखा जाएगा. जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट करने वाले लोग विच इज मेंट बाय what is meant by that autonomous driving. JLR is working on advancing autonomous vehicle technologies. Their roadmap includes not only self-driving compatibilities but also improvement in connectivity and digital features to enhance the driving experience. Self-driving cars को देखा जा रहा है. Approach informative and AI integration. The brand has been integrating advanced AI, better connectivity features, and more intuition information system to ensure a seamless user experience. Jaguar vehicle, for example, will feature all AI power assistance, and Land Rover model will include more off-road digital tools. So Land Rover के लोग more off-road रखने की कोशिश कर रहे हैं, and Jaguar जो है, which is on a more luxury side, will be a proper AI assisted assistance होगा Jaguar में. Jaguar में एक proper Jaguar vehicle for example will feature a proper AI assistance and Jaguar फिर off road and जो Range Rover है इसमें off roading compatibilities के हिसाब से AI integrate करने की देख रहे हैं. Fully autonomous driving and AI integrate करने की सोच रहे हैं लोग cars में. This is a brief of the same. Let's go down. Luxury innovations. JLR continues to focus on enhancing its luxury positions, particularly for Jaguar brand. The company inventions combination traditional luxury with cutting-edge technologies, focusing on refined customer experience. So here they are want to say कि वो luxury को increase करना चाहता है. They want to upgrade their self on luxury basis. Good, great. They are a luxury line segment. We said here again. मैंने यही बताया था आपको. हम लोग उसको कभी भी जे का टाटा मोटर्स को ऑन रियल बेसिस वी कांट कंपेयर इट विद एनी अदर बिकॉज दिस इंक्लूड्स पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, लग्जरी सेगमेंट ऑफ जेएलआर. उसमें लग्जरी सेगमेंट ऑफ जेएलआर है, इसलिए हम लोग उसको कभी महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति एंड सुजुकी या फिर अशोक लेलैंड से डायरेक्ट पीयर टू पीयर कंपैरिजन नहीं कर सकते. दैट्स द इशू विद टाटा मोटर्स. ठीक है. एंड द लग्जरी सेगमेंट इज नॉट अ माइनर थिंग, इट्स कंट्रीब्यूटिंग टू 68 परसेंटाइल. दैट्स नॉट अ जोक. ठीक है. Reimagination of Jaguar brand, shift off to pure electric vehicle. Jaguar transformations into a fully electrical brand is a central aspect of JLR long term vision. JLR पूरा का पूरा electric brand होने की तरफ जाने वाला long term vision है JLR का. The company plans to create high performance electric vehicle to focus on sustainability while retaining the blank luxury segment को रखते हुए ये इलेक्ट्रिक के साइड शिफ्ट होने की सोच रहे हैं. Range expansion. Expect the Jaguar lineup to include a mix of sedans, SUVs, and possibly new model design specifically for electric performance. Range expansion हम लोग देखने वाले हैं. Expect the Jaguar lineup to include a mix of sedans,
SUVs and possibly new models designed specially for electric performance. इलेक्ट्रिक परफॉर्मेंस की और हम लोग इसका मोर ऑफ 10 देखने वाला है, ठीक है. सो दे आर प्लानिंग टू गो ऑल इलेक्ट्रिक. They are planning to go all electric here. Sorry, here. Just a little bit up. Okay, yeah, here. They are planning to go all electric. Great. Global expansion and innovation hub. JLR aims to bolster its global presence by expanding production in key regions and investing in innovation hubs to collaborate on future mobility technologies from EV development to sustainable tech advancement. ये लोग दोनों तरीके से काम करने वाले हैं. फुल ईवी साइड एंड टेक एडवांसमेंट दोनों साइड जेएलआर थोड़ा एम्फोसिस करेगा for the change to happen. Its essence, in essence, JLR is positioning itself as a future forward brand committed to electric mobility, luxury, sustainability, and cutting edge technology to appeal to evolve consumer demands while staying to its premium automation heritage. और वेरी गुड इंपॉर्टेंट, जेएलआर आने वाले समय में 3 से 4 चीजों पे कमिटेड है. Full electric convert on electric mobility. They are gonna maintain their luxury line segment, the feel of luxury, the luxury they are known for, वो उस चीज को maintain करने वाले हैं. Sustainability means जो हमने यहाँ पे पढ़ा, by the end of sustainability manufacture, the company is increasing, not this, uh, carbon neutral by 2039, sustainability manufacturing. This is meant by sustain. They are going to go sustainable, electric, all electric, luxury, maintain the luxury theme of their brand, all sustainable जाने वाला है. कटिंग एज टेक्नोलॉजीज में वो लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं, काफी टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट लाने वाले वो लोग अपने कार्स में, फ्रॉम फीचरिंग ऑल AI assistance in Jaguar and a little bit of features in Land Rover as well, to appeal to evolving customer demand while staying true to its premium automation heritage. So this is the full story of JLR. आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ टाटा मोटर्स के केस में, कि टाटा मोटर्स इज टाटा मोटर्स, but more than Tata Motors, it's JLR. Too. क्योंकि it contributes 68%. Hope you understood what I want to say and what I want to conclude in this video. So, for the sake of now, that's what we are having in on our discussion panel, and hope you understand what's the meaning of this. That Tata Motors only Tata Motors or is Jaguar and Land Rover, what I meant by that. Hope you understood the video. This is not any kind of investment advice. So बस इतना ही है कि टाटा मोटर्स इज गोना गो ऑल इलेक्ट्रिक, और दे आर वेरी बुलिश ऑन इलेक्ट्रिक infrastructure, going all electric, going zero carbon neutral emissions and all green. They are very bullish on that thing. They want to go that way, going all electric, going pure carbon, no any without any kind of environmental pollutions and all. So hope you like it. Hope you like the video, and I hope you understand. I hope आपके लाइफ में इस वीडियो ने थोड़ा बहुत कुछ वैल्यू ऐड किया हो. अगर वैल्यू ऐड की होगी तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द वीडियो, टू द चैनल शिवम पाटिल, and that's it for the Shivam show. Thank you so much. If you like the video, please comment on it. Please like it. Comment what you liked, what you not, and let's meet each other in any other informative video as of today. Thank you so much.